Yes, due to a technical glitch, we could not take the session yesterday, but we are back here, and I really missed you because I want to tell you, I want to show you how cool is this paper that we're going to do today. And you have to be really, really positive, very happy, and very confident because आज के paper में I'm going to show you that it's so simple. Every single thing that we're doing in today's paper, we must have already done it. भले वो हमारा the YouTube free session on YouTube for the crash course, our paid crash course users, or our year-long, regular session crash course users. We've done every question in this paper. If we've not done the question, we've discussed the concepts. I promise to you, I can tell you it's going to be an easy paper, my dear children. So all of you have to be extremely confident and you all have to be, very happy, no stress because you will all do very well. Cool? Chaliye, let's start today's super cool, awesome paper. Now you see Mendel पे तो हर साल एक question आता ही है, right? We've seen that in day before yesterday's paper. We saw that in yesterday's paper. Every year one question comes on Mendel. So in his classical experiment, what did he not use? जैसे मैंने कल आपको motivation में भी बोला था. Please ध्यान से paper पढ़िएगा. What did he not use? See, seed shape was used by him as one of the 7 characters. Flower position, axial है या terminal है, color yellow है या green है. Pod की shape थी, pod का color था, but pod की length nahi thi. So did not select the pod length as one of the characteristic features. Which of the following is not applicable to RNA? You all know the RNA is single-stranded. Correct. Right. The RNA has polarity. It is 5' to 3'. So anything, Chargaff's rule to tab follow होते हैं ना. अगर adenine is equal to thymine and guanine is equal to cytosine, they have to be equal because अगर इधर adenine है इधर thymine है. So because it is single-stranded, there will be no base pairing, and because base pairing ही नहीं होगी, so Chargaff's rule follow नहीं होंगे. Everything else will be followed, but Chargaff's rule cannot be followed. Correct? Chaliye, let's move on to the super cool next question. Male gametophyte in angiosperms produces what? Right? So देखो, male gametophyte, pollen grain is the first male gametophyte. This is your pollen grain. So now the pollen grain has got 2 parts. It has a vegetative and a generative nucleus. So let's call this generative nucleus. Let's call this vegetative nucleus. Vegetative pollen tube बनाएगा. And the generative will further break down into 2. So this is the first male gamete and this will be the second male gamete. Correct? So it divides into generative and vegetative, and the generative further divides into 2 sperms. So answer will be 2 sperms of the generative and a vegetative. How simple is this? Is that clear? Moving ahead. Chaliye, which of the following are not membrane bound? You should know ribosomes are very, very dense particles. They are very dense particles. Ribosome के बाहर कोई भी membrane नहीं होती है. Correct? They are extremely dense particles. Right? They are also known as Faraday particles. They are very, very dense particles. इनके बाहर membrane नहीं होती है. The chitinous exoskeleton of arthropods. Right? Chitin का जो exoskeleton बना होता है arthropods का, it is made up of N-acetyl glucosamine. राइट, लाइपोग्लाइकन्स का नहीं होता, केराटिन का नहीं होता, ग्लूकोसामाइन का होता है, बट एन एसिटाइल, राइट, डेक्स्ट्रोरोटेटरी नहीं होता, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का बना हुआ होता है. चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, गुआवा, कुकुम्बर, अनियन एंड ट्यूलिप में सुपीरियर ओवरी किसकी? सुपीरियर ओवरी मींस द ओवरी इज ऑन टॉप एंड एवरीथिंग एल्स इज टेकिंग ओरिजिन फ्रॉम बिलो द ओवरी. ओवरी ऊपर है और बाकी सब कुछ ओवरी के नीचे से. ऊपर है ओवरी, सुपीरियर ओवरी है, तो किस किस में होता है? सुपीरियर ओवरी इज फाउंड इन चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, अनियन एंड ट्यूलिप. एनी डाउट्स? इज इट ऑल क्लियर? यस, तो आंसर होगा 6 because 6 of them have superior ovary. Gap junction का क्या काम होता है? Correct? So this is the pre-synapse, the post-synapse. There's a little gap junction through which electrical impulses are transmitted. So gap junction is going to facilitate communication between adjoining cells by connecting the cytoplasm for rapid transfer of iron, small molecules and some large molecules. Correct? Okay. Which of the following immunoglobulins does constitute the largest percentage of human milk? तो भले ही वो milk है, भले ही वो tears है, भले ही वो saliva है, या वो mucus है. These are all secretions, excretions of the body. So they will have IgA, which is nothing but the secretory immunoglobulin. क्या है ये? Secretory. Immunoglobulin किसकी बनी हुई? It's made up of a protein called gamma globulin. Cool?
In mammalian eye, what is the fovea? Right? The fovea is a part where you have very clear visual acuity hai. What do you understand by visual acuity? You are able to see extremely clear, very bright images. Agar optic nerve leave karegi to fir to hum वैसे ही we will not be able to see it at all. So it is not the optic nerve. They have high density of cones but has no rods, and therefore we are able to see everything extremely clearly. Doctor stethoscope use karte hain during the cardiac cycle to hear the heart sounds. We have the first heart sound. The first heart sound is between the auricle and the ventricle. So jab AV valves close hote hain, we have the first heart sound. Jab ventricle se, from the ventricle, when the pulmonary artery or the aorta leaves, right, it is due to the ventricular systole, due to sharp closure of the semilunar valves when they leave from the ventricle. Easy. Yes, are you able to solve every question? परसों हमने किया है. Coconut water is nothing but endosperm. So the endosperm of coconut is divided into two parts. You have the cellular endosperm and you have the liquid endosperm. The coconut that we eat and make chutneys is the cellular endosperm. And this is the liquid endosperm, which is nothing but free nuclear endosperm. Cutting of DNA at specific location is with the help of, yes, restriction enzyme cuts it. Selectable marker will tell us which is a transformant oblique a non-transformant. Ligase will join it. और single stranded probes पे अगर मैं radioactive material लगा दूं जिसकी वजह से they will go and stick to the complementary bases और मुझे पता चल जाएंगे, that is called as probes. Cool. Which of the following structures is not found in a prokaryotic cell? It's a prokaryote. It is a monera. It's a prokaryote. It will not have a nucleus. Na rahega baans, na bajegi bansuri. So obviously, if there's no nucleus, there is absolutely no nuclear envelope. Among the following events of meiosis, put them in the correct sequence. We've done it in 2 days prior class in detail. The sequence of events during meiosis are the chromosomes, they come together. That's called synapses, happens in zygotine. After coming together, they do crossing over in pachytene substage. Then they do terminalization of chiasmata. And finally, they do disappearance of nucleolus. Right? So the first stage is this. The second stage has to be pachytene or the crossing over. Third stage has to be terminalization of chiasmata. And the fourth has to be disappearance of nucleolus. A column of water, right? So you know the column of water is rising up. That means it has both adhesion and cohesion between like molecules, adhesion between unlike molecules, cohesion force. Yes, everybody. So ये water से चिपकेगा and it's going up. And water जो है वो xylem vessel से भी चिपका हुआ है. पानी पानी से चिपका हुआ है और पानी xylem vessel से भी चिपका हुआ है. That's because of the high tensile strength, जिसकी वजह से the column of water does not break. It's imperfect fungi. ये तो इतना easy question है. It is not basidium. It is not fungus of the plant. It is not sac-shaped ascus. अगर imperfect fungi, it's a highly evolved fungi. It's called as deuteromycetes. Imperfect fungi, which are decomposers of litter and help in mineral cycling. Next question. The structures that help the bacteria to attach. बैक्टीरिया जो है वो रॉक्स पे, सबस्ट्रेटम पे, स्किन पे, ट्यूब्स पे, बैक्टीरिया हॉस्पिटल के बेड्स पे दे अटैच एंड दे फॉर्म कॉलोनीज एंड दीज कॉलोनीज आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स एंड दे कॉज सो मच ऑफ प्रॉब्लम्स. Infolding of the membrane is mesofast. Holdfast and rhizoids are found in algae. Correct? Stipe, holdfast, rhizoids. Bacteria have fimbriae for attachment. Such a simple question. The DNA molecule to which the gene of interest is added. Let us say the gene of interest is insulin. So this is a bacteria, let's say E. coli. बैक्टीरिया के पास होगा प्लाज्मिड. प्लाज्मिड को मैं कट करूंगी और उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दूंगी. सो व्हाट इज द प्लाज्मिड? द प्लाज्मिड इज द कैरियर ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, सो इट्स कॉल्ड एज वेक्टर. करेक्ट? प्लाज्मिड क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस नाम के बैक्टीरिया में एक प्लाज्मिड होता है, टीआई प्लाज्मिड, जिसके अंदर मैं फॉरेन जीन ऐड कर देती हूँ. सो व्हाट इज द प्लाज्मिड? द प्लाज्मिड इज अ वेक्टर. पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट. रॉन्ग स्टेटमेंट. Nuclear membrane. अभी देखो, see how in a single paper they've given you flip questions. Just now we've done it. अब आया था ये प्रोकैरियोट बनके. अब प्रोकैरियोट है, मोनेरा है, उसके पास तो न्यूक्लियस ही नहीं है. सो अगर न्यूक्लियस ही नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो हो ही नहीं सकता. If there is no nucleus, there cannot be a nuclear membrane.
Can you see with what speed we are doing the paper? I want everybody to pat your back. Come on. In just about 10 minutes, we've moved on to question number 19. Cool half the time. How cool is that? Chali, moving ahead to the next question. मेटाजेनेसिस भी हमने 2 दिन पहले की क्लास में किया था. इट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ओबेलिया में होता है. व्हाट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? दैट मींस इन वन साइड आई हैव अ पॉलिप एंड अ मेडुसा फॉर्म. एक सेक्सुअल फॉर्म है, एक एसेक्सुअल फॉर्म है. सो सीलंट्रेटास में मेटाजेनेसिस इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन पॉलिप एंड मेडुसा. राइट, फ्री फ्लोटिंग मेडुसा फॉर्म और पॉलिप फॉर्म में क्या है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है. पॉलिप जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और मेडुसा जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है पॉलिप बनाने के लिए. तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेडुसा बनाएगा और मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पॉलिप बनाएगा. सो इट्स एन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इट्स कॉल्ड मेटाजेनेसिस. Which of the following events is not associated with ovulation in human female? राइट, ओव्यूलेशन के टाइम ग्राफिन फॉलिकल बर्स्ट होगी, फुल्ली डेवलप्ड होगी, यस. सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, यस. 14th डे LH सर्ज होगा जिसकी वजह से एस्ट्रोजन रिलीज होकर ओव्यूलेशन होगा. डिक्रीज इन एस्ट्रोजन, अभी तो बोला एस्ट्रोजन रिलीज होगा, इट विल बी इंक्रीज. सो डिक्रीज इज रॉन्ग. डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा. देयरफॉर दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन प्लीज. Which of the following joints would show no movement? आपके skull के joints, right? Right, everybody. Parietal bone, occipital bone, frontal bone, temporal bone के बीच के joints are fibrous joints. They are joined with the help of fibrous connective tissue. बहुत सारा collagen deposit हो गया है. They will never move. The ball and socket joint moves. The synovial joint, the knee joint moves. The cartilaginous joint moves, but the fibrous joint does not move. I have a awesome chart on it. इसमें से तो एक ना एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा. चलिए 2 मिनट के लिए सॉल्व करिए and then I will make you by heart the chart right now in the class. It's a very important chart. चलिए, yes, look at this. Saccharomyces cerevisiae, baker's yeast, brewer's yeast, it will give you ethanol, it will produce carbon dioxide, help you to make breads and cheese. Monascus purpureus will give you material called statins, yaad rakhega. So Monascus purpureus will give you statins which lower the blood cholesterol. Trichoderma polysporum will produce immunosuppressive agents by the name of cyclosporin. So अगर किसी को कोई ग्राफ्ट देना है, लंग ट्रांसप्लांट करनी है, लिवर ट्रांसप्लांट करना है, किडनी ट्रांसप्लांट करनी है, यू नो इन ट्रांसप्लांट द टी सेल्स गो एंड अटैक. कौन से सेल अटैक करते हैं ट्रांसप्लांट में? टी सेल्स. तो हम उनको क्या देते हैं? वी गिव देम cyclosporins. Propionobacterium shermani will help you to ripen Swiss cheese. UN conference जो हुआ था for the year 2012 to talk about climate change. The climate change is real and we should do about it. Happened at Doha. Cool. Easy question. अगर आपको लग रहा है कि किसी पर्सन की बॉडी में एंटीबॉडीज की कमी है, दैट मीन्स उस पर्सन को बार बार खांसी जुकाम हो रहा है, दैट पर्सन इज फॉलिंग सिक अगेन एंड अगेन, दैट मीन्स उसके पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं है, इट डजंट हैव एंटीबॉडीज टू फाइट. What test will you do? Albumin is for water level, osmosis in the blood. Hemocytes are RBCs, oxygen transport. Fibrinogen will help you to clot. It is only globulins which will help you to make antibodies. So you will check serum globulins. Chroma का मतलब होता है color. So chromatophores are nothing but pigments which are present in prokaryotes which help you to do photosynthesis. इनका growth, movement, respiration से कोई लेना देना नहीं है. Chroma U, chroma value are the 3 things which are used for color. So chromatophores will obviously help you to do photosynthesis. How simple. Acid rain. अगर acid rain हो रही है, who will tell you? Lichens, because lichens are very, very sensitive to sulfur dioxide. So sulfur dioxide and nitrogen dioxide will decrease the pH of the rainwater, which is called as acid rain. They basically come out from vehicular pollution. इससे easy paper हो सकता है? मुझे बताओ. इकोलॉजिकल सक्सेशन. आप कहां से जा रहे हो? आप पायनियर स्पीशीज से स्टार्ट कर रहे हो. सबसे पहले आपने कहां से शुरू किया? आपने शुरू किया सॉइल प्रोडक्शन से. सो फ्रॉम पायनियर स्पीशीज आप धीरे धीरे सक्सेशन कर रहे हो. बीच की स्टेजेस को सेरल स्टेजेस कहते हैं और फाइनली आप कहां तक पहुंच चुके हो? क्लाइमैक्स तक पहुंच चुके हो. राइट. सो इकोलॉजिकल सक्सेशन इन्वॉल्व्स अ ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंज. पायनियर, सबसे पहले लाइकन्स आएंगे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. राइट. सो इट्स gradual, it is predictable change in species composition of a given area.
ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी टूटता है तभी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल ठीक है। इसके लिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए क्या चाहिए होता है, बहुत सिंपल है, मैंगनीज, क्लोरीन और कैल्शियम के बिना फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा। So it has to be manganese and chlorine. This is like a multiple time MCQ question. Cool. Right? It will happen during light reaction of photosynthesis at PS2. Which of the following pairs is not correctly matched? Right? Banana, Rhizomatous sucker, Conidia, exospores, penicillium में होते हैं ऐसे, Conidia spores बाहर को लगे होते हैं, sporangium नहीं है. Offsets are made in water hyacinth, offsets are made in Eichhornia, offsets are made in Pistia. Binary fission और sargassum नहीं, binary fission तो yeast करेगी, तो बाइनरी फिशन तो सैक्रोबाइसिस क्रूवेसी करेगी, सरगासम इज एन एल्गी, वो कहां से बाइनरी फिशन कर लेगा? इज दैट क्लियर? एनी डाउट्स? राइट, आ जाइए अब ये पेडिग्री एनालिसिस देखिए। सबसे पहले सिर्फ इस पे फोकस करिए, इस छोटे से चार्ट पे फोकस करिए। पेरेंट्स को नहीं है, यस, फिर भी बच्चों को हो गया है, यस, दैट मींस ये रिसेसिव है, बिल्कुल, वरना पेरेंट्स को भी होना चाहिए था अगर डोमिनेंट होता, मतलब ये रिसेसिव है। पॉइंट नंबर 1, राइट। तो ये डोमिनेंट तो नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं होने के बावजूद, देखो दोबारा, पेरेंट्स को नहीं होने के बावजूद बच्चों को हो रहा है, सो इट इज रिसेसिव। अब देखिए, क्या आपको इसमें क्रिस क्रॉस नजर आ रहा है? मुझे तो नहीं नजर आ रहा। मतलब आपको ये दिख रहा है कि ऊपर वाली जनरेशन में सिर्फ मदर को है, मदर से सन को आया, सन से जो है वो दोबारा डॉटर को गया, डॉटर से सन, नो, ये तो दोनों सेक्सेस में इक्वली है, राइट। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ऐसे पैटर्न फॉलो कर रहा है, सो इट हैज टू बी ऑटोसोमल रिसेसिव। एक्स लिंक तो हुआ नहीं, क्योंकि ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इट्स नॉट फॉलोइंग क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, so it cannot be X linked, therefore it has to be autosomal. Which of the following animals has two separate circulatory paths? When I talk about two separate circulatory paths, I'm talking about the pulmonary path, cool, and I'm talking about the systemic path. Cool, everybody? So what are the two separate paths which we have? Pulmonary as well as systemic. They are present in whales, right? They're present in whales. Flowers are unisexual in, they just have a single sex, unisexual flowers in cucumber. Cucumber has a bale like this. This is a male flower. This is a female flower. Again, male flower, female flower. Is that clear? Cucurbitaceae has unisexual flowers. Both, all three of them are usually bisexual. What are they? High five. Bisexual. Which of the following foods is parthenocarpic? What do you understand by parthenocarpic? Formation of fruit without fertilization. That means seeds nahi honge. If it's without fertilization, there will be, but obviously absolutely no seeds. Apple के पास seeds है, jackfruit के पास seeds है, brinjal के पास seeds है, banana has no seeds. So it's produced by parthenogenesis. Pleiotropic is a gene which has one gene, many effects, बहुत effects होंगे, एक जीन के multiple effect बना दो आप, वो बन जाएगी आपकी प्लियोट्रोपिक जीन। किसका एग्जांपल लोगे? क्लासिकल एग्जांपल, सिकल सेल एनीमिया। So does it control multiple traits? One gene, many effects, that means it controls multiple traits in an individual? Absolutely. Which of the following is not a function of the skeletal system? Skeletal system का function कौन नहीं है? Minerals, calcium, phosphorus store करता है, yes. Right, locomotion में movement करता है, I'm able to move because of skeletal erythrocytes from the bone marrow, absolutely. Production of the body heat is a function of the adipose tissue or the fat. It's a function of the muscles by doing contraction, relaxation. It's not a function of the skeletal system. एक jawless fish है, तो jawless fish आपको वैसे पता चल गया, which lays eggs in fresh water. Anadromous कर रहा है ये, right? Fresh water में egg lay down करता है, egg fresh water में hatch होता है, एग से फिश निकलता है, बट फिश जो है वो हैच होते ही कहां चली जाती है? दोबारा स्टॉप्स फीडिंग एंड डाइज एडल्ट, एंड लार्वा जो है वो मेटामॉर्फोसिस के बाद इट विल रिटर्न बैक टू द ओशन। सो हैच कहां हुआ? फ्रेश वाटर में, पर वापस रिटर्न कहां कर गया? ओशन में। इट इज टीरोमाइजोन लैम्प्री, इट्स अ माइग्रेटरी फिश. It goes to lay eggs in the fresh water. The larva hatches in the fresh water, but goes back to the sea. Right? This is your embryo sac. This will be your egg here. This is your synergid with finger-like processes to attract the fallopian tube. So your filiform or your, attract the male pollen tube. That means filiform apparatus is a part of the synergids. इससे सिंपल पेपर नहीं हो सकता. लेट मी टेल यू राइट नाउ, इससे इजी, और वो इजी क्यों लग रहा है? आप किसी उस बच्चे को पेपर दे दीजिए जिसने पढ़ा ही नहीं है,
राइट right? ऑब्वियसली उनको इजी नहीं लगेगा, बट यस यू हैव स्टडीड, आई हैव टॉट, मुझे ये पेपर पता है, आप लोग ऐसा पेपर एग्जाम में असली में फोड़ाओगे। चलिए बताइए इसका ऑर्डर। सबसे बाहर होता है फेलम, कोक, डेड, आउटर मोस्ट होता है, कूल, इट इज द बार्क। उसके बाद होता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, तो ये फर्स्ट है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, उसके बाद होता है देन कम्स योर सेकेंडरी फ्लोएम, थर्ड पार्ट पे, राइट right? और सबसे अंदर जो वाटर ट्रांसपोर्ट करता है वुड और द सेकेंडरी जाइलम इज द इनर मोस्ट, right? So it has to be phellum, which is B. Then it has to be, you know, the secondary cortex, which is A. Then it has to, so DA. DA का तो ऑप्शन एक बन रहा है, DACB. Cool. चलिए आगे बढ़े। Which of the following hormones is not involved in sugar metabolism? Insulin increases, you know, डायबिटीज कंडीशन, ये ब्लड शुगर अगर नहीं है तो डायबिटीज होता है, तो इट डिक्रीजेस द ब्लड शुगर, अगर नहीं है तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। Glucagon increases the blood sugar. Cortisol also secreted during stress from the adrenal glands increases the blood sugar. Fight and flight hormone. Aldosterone का तो सारा काम ही सोडियम से है, वाटर रिटेंशन करेगा, सोडियम एब्जॉर्प्शन, वाटर रिटेंशन, इसका कोई भी शुगर से काम नहीं है। Golden rice is a bio-fortified crop, right? It's a genetically modified crop. It has increased amount of vitamin A, इसीलिए ये नाइट ब्लाइंडनेस में दिया जाता है, निक्टोलोपिया में दिया जाता है। बीटा कैरोटीन की जीन होती है, it has vitamin A. Is that clear? Outbreeding is nothing but when you cross it with an unrelated individual. ये आपके पास इंडिविजुअल एक्स है, आपने इसका इंडिविजुअल एक्स प्राइम से बार 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 क्रॉस करवा दिया विद रिलेटेड इंडिविजुअल्स, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर अपने में ही क्रॉस होता जा रहा है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। सो इफ इट इज बार बार क्रॉस अमंग्स द सेम रिलेटेड स्पीशीज, देयर विल बी इनब्रीडिंग डिप्रेशन। To overcome inbreeding depression, I must do outbreeding. That means I must cross it with somebody who's not related, a gene showing codominance, right? So let me draw a codominance gene here. Let's use isoagglutinin here. IAIB, that person will have blood group AB, right? So alleles are the ones which are, you know, both the alleles are independently expressed in heterozygote during codominance. You will have blood group called AB, codominance. Cool. Next question, which of the following hormones, though synthesized elsewhere, hypothalamus बनाएगा, hypothalamus manufacture करके posterior pituitary को दे देगा, posterior pituitary बेचारा उसको सिर्फ स्टोर करेगा और रिलीज करेगा, posterior pituitary उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, that has to be the antidiuretic hormone. Cool. चलिए, how nice, how nice. I'm feeling so happy, and so proud that you're all doing so well. Increase in concentration of the toxic substance, right? Mercury है, lead है, अब mercury lead ले लीजिए, मिट्टी में चला गया है, पॉन्ड वाटर में चला गया है, फिशेस में बड़ा, फिशेस से बड़ी फिशेस में और बड़ा, राइट? उनको खाने के लिए कोई स्टॉर्क आई, कोई बर्ड आया, उसमें बड़ा, ह्यूमंस ने खाया, ह्यूमंस में और बढ़ गया। इट्स कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। विद एवरी, you know, next level of the trophic level, the amount of the toxic substance increases. That's called as biomagnification. Industrial melanism. बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आपका व्हाइट मॉथ ज्यादा था, बिकॉज ट्रीज पे लाइकन से व्हाइट मॉथ छुप जाता था। आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पेड़ पे कालापन चिपक गया, सूट डिपॉजिट हो गया, ब्लैक मॉथ कैमोफ्लेज होने लगे, दे आर इंक्रीजिंग। सो द नेचर इज सिलेक्टिंग अकॉर्डिंग टू the surroundings. That's called as natural selection. Mutation की स्टडी ह्यूगो डिब्रीज ने की थी, ओइनोथेरा लेमार्कियाना। प्राइमरी डेंटिशन परसों किया है, प्राइमरी डेंटिशन, बेचारे बच्चे के पास प्री मोलर नहीं होगा, देखो क्वेश्चन आया था, मम्मी पापा ले जाना चाहते हैं उसको डेंटिस्ट के पास, प्री मोलर नहीं होगा, डेंटल फॉर्मूला हो जाएगा 2102, they will not have premolars. Cool. इन एडल्ट्स यू हैव 2 1 2 3 प्रीमोलर्स भी होंगे और 3 मोलर हो जाएंगे, विजडम टूथ आ जाएगा। व्हीट ग्रेन, राइट? मोनोकॉट्स का व्हीट ग्रेन, मोनोकॉट्स, इट्स कॉल्ड अ स्क्यूटेलम। कोलियोराइजा इज द टिप ऑफ द ग्रोइंग रूट, कोलियोप्टाइल इज द टिप ऑफ द ग्रोइंग शूट, राइट? एंड व्हीट ग्रेन इट्स कॉल्ड अ स्क्यूटेलम। The body cells in cockroach uric acid secrete करेगा, so but obviously यूरिया नहीं करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट तो बोन्स में होता है।
अमोनिया जो है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सिक्रीट करेंगे. सो कॉकरोच जो यूरिक एसिड है उसको पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में रिलीज करता है. किसके फॉर्म में रिलीज करता है? इट रिलीजेस इट इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम यूरेट. This question we've solved in UT, in YT lectures, we've solved this question in our classes. Very important, multiple times. Which are the following molecules है phosphodiester bond? कल पढ़ा है, परसों की क्लास में हमने क्वेश्चन किया है प्रीवियस ईयर में. तब पूछा गया था कि भाई प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड नहीं होता. यही नहीं होता प्रोटीन में, क्योंकि किसमें होता है? दिस बॉन्ड इज प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड्स. Right? So nucleic acid and nucleotide, it's a bond between two nucleotides of a nucleic acid. Right? DNA के दो sugar phosphate backbone nucleotides के बीच में bond होता है. Correct? That's a phosphodiester bond. टर्म लिंकेज जो है, सूटोन एंड बोवरी ने क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस दिया था. टीएच मॉर्गन ने लिंकेज दिया था. सूटोन एंड बोवरी ने क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस दिया था. मिस्टर मेंडल ने तो फाइसम पे काम किया था. लिंकेज वाज डिस्कवर्ड इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर. Linkage is inversely proportional to independent assortment. Independent assortment was discovered by Mendel. Linkage was discovered by T.H. Morgan. Which one is the wrong statement? Mucor is non-motile spore. Sporangiosspore है, it's not a zoospore. गलत. म्यूकोर तो ऐसा दिखता है, ऐसा इसके अंदर होते हैं स्पोर्स, उनमें फ्लैजेला नहीं होता. It's a sporangiospore. It's covered on the outside by sporangium. It's a sporangiospore. It is not a zoospore. Ectopic pregnancy. By chance of pregnancy, यूट्रस को छोड़कर और कहीं भी हो जाए, प्रेगनेंसी फेलोपियन ट्यूब में हो जाए, राइट, इस टिप में हो जाए. प्रेगनेंसी हैपेंस इन द सर्विक्स. राइट, यूट्रस को छोड़ के प्रेगनेंसी कहीं भी हो जाए, दैट्स कॉल्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी. इट इज इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइड अदर देन द यूटरस. Right? Most animals that live in deep oceanic waters, benthic trenches में जो रहते हैं, Aquaman movie, but Aquaman मत टिक मार्क करके आ जाइएगा. Yes, so those organisms are detrivores. There is no light there. There's nothing to eat. They only depend on dead, decaying organisms. Which of the following diseases is caused by a protozoan? Influenza is caused by a virus. Blastomycosis is caused by a fungus. Syphilis is caused by a bacteria. Babesiosis is caused by Babesia bigemina. It's tick fever. It's basically happening in cattle. It's caused by a protozoa. Cool. Moving ahead. In which of the following interactions both partners are adversely affected? Predation में एक का फायदा, एक का नुकसान. Parasitism में एक का फायदा, एक का नुकसान. Mutualism में, right, दोनों का फायदा. Right, competition में दोनों का नुकसान. So when both of them are adversely affected, it's called as competition. Identify the correct order. सबसे ऊपर होगा जीनोम. जीनोम से we can even make an organism. If I'm doing cloning, अगर मेरे पास किसी organism का जीनोम है, I can even make that organism. So genome, correct है everybody? Genome is the highest. Genome में होगा chromosomes. Chromosome के अंदर होंगी genes और genes के अंदर होंगे ATGC base pairs जिनको हम nucleotides कहते. A colorblind man, father is colorblind, X prime Y, who marries a woman with normal sight. Correct? ऐसा हो जाएगा. With no history of color blindness in a family. What is the probability of the grandson? तो daughter carrier होने का chance है. Correct? Right? And daughter अगर carrier हो जाती है, which 50% chance. Right, everybody? Right? कि तो उसकी 50% chance होगा कि grandson भी, is going to be affected. Probability कितनी हो जाएगी? 0.5 की. Cool. Any doubts? Anything that you have not been able to understand? Photosynthesis, light independent. देखो light पे जो reactions dependent है, they will happen either PS2 पे, photosystem 2 पे, या photosystem 1 पे 680 या 700 nanometers पे, जो granathyloid में होता है. तो ये जो तीन मैंने green से mark किए हैं, ये तो light reaction है. Right? Dark reaction. Light independent means we're talking about dark reaction. मतलब enzymes चाहिए, which is happening in the stroma. Easy peasy. Cool. I want everybody to give me a high five in the class right now and feel super cool and super great about it. देखो बच्चों, मेरे पास हजारों मैसेज आते हैं, हजारों, in my email ID, on my WhatsApp, some of those who have my personal numbers, on YouTube, so many messages, and they tell me, ma'am, your voice fills us with so much energy and fills us with so much josh. Obviously, I have to bring that energy out ताकि मैं आप लोगों को, I can motivate you and I can make you feel good about it. अब ये question मैं ऐसे भी पढ़ सकती हूँ. In photosynthesis, the light independent reactions take place at photosystem 1, photosystem 2, stromal matrix, thylo. बताओ बच्चों, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा photosystem 2.
Are you even going to feel like you have to sit and solve? My voice has to carry you through the examination. Yes? So stay happy, stay positive, do well, my dear children. Our best wishes are with you, and Vedantu is always with you. Sulfur और phosphorus जो है ना बच्चों, वो sedimentary life cycle. I mean, sedimentary cycle करता है because it's present in the Earth's crust. Whereas gaseous nutrient cycle will be carbon and nitrogen because it's present in the air. Yes, everybody. Ecology से बहुत questions आते हैं. Such an easy question. Introduction of tDNA, right? TI plasmid होता है, एक plasmid होता है, इसका नाम tumor inducing plasmid होता है. क्या नाम होता है? Tumor inducing plasmid. ये किस में होता है? ये Agrobacterium tumefaciens नाम के एक बैक्टीरिया में होता है. So ये रहा Agrobacterium tumefaciens, इसके अंदर एक TI plasmid है. TI plasmid से मैं ट्यूमर वाली जीन हटा देती हूँ. I remove the tumor gene because I don't want to cause a tumor. Tumor is called crown and gall disease जो plants में होता है. What is the tumor called? Crown and gall. और इसकी जगह मैं gene of interest डाल देती हूँ. So introduction of tDNA in plant involves infection of the plant by Agrobacterium tumefaciens. It's called the natural, a genetic engineer because इसके पास अपने आप ही TI plasmid होता है. Wings of bird and wings of insects. Bird के wings बने हुए forelimbs से. Insects के wings तो सिर्फ चिपके हुए, they are appendages. उसके limbs नहीं है, पैर अलग से नीचे होते हैं. But in both of them, is it doing the same function? The different structure and origin, but perform the similar function of flying. So they are analogous. They are both, meeting at a common point called flying. Are they meeting at a common point called flying? So that's why it's convergent evolution. Any doubts? रूट प्रेशर इज यूजुअली एसिडिक बिकॉज रूट्स जो है वो अपने अंदर आयंस को एक्यूमुलेट करना शुरू कर लेती हैं. दे एक्यूमुलेट आयंस इन देम, द रूट्स, राइट? सो बिकॉज दे एक्यूमुलेट. अब देखो, जो यूरिन है, वी डोंट वांट द यूरिन टू स्टे इन द यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर में वो इन्फेक्शन कॉज करे, हमें नहीं चाहिए. इसलिए हम यूरिन के अंदर क्या पंप कर देते हैं? H+. ओके. So therefore, ions from the soil are actively transported into the vascular tissues of the roots. I absorb the ions from the soil so that root pressure is usually acidic. अब होता ये भी है that in the root, suppose ये root है, when I have ions, when I have K, Cl, Na, I have ions. उसके पीछे पीछे obviously कौन आएगा? Water. So when I absorb solutes, the solvent will automatically come. Same question, human urine acidic क्यों है? Because hydrogen ions are actively secreted into the filtrate. I add hydrogen ions in the urine so that the urine can remain acidic and it cannot catch infections. Protoplast क्या है? ये सेल है, ये इसका सेल वॉल है. आप सेल वॉल हटा दीजिए, प्लांट सेल से आप सेल वॉल हटा दीजिए. सो द मेम्ब्रेन एंड द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियोप्लाज्म, एवरीथिंग इज कॉल्ड द प्रोटोप्लास्ट. इट्स विदाउट cell wall. The species. Now, if you go to the Dachigam Wildlife Sanctuary, whatever I'm saying is very important in Jammu and Kashmir, you will find the musk deer. If you go to the, the Run of Kutch Wildlife Sanctuary, you will find the wild ass, which is not found anywhere else in the world. If you come to Kaziranga, you will find the one-horned rhinoceros, right? If you go to the Nilgiri Biosphere Reserve, you will have the squirrel, the giant Malabar squirrel. So these species are endemic. ये वहीं पाई जाती है और कहीं पाई नहीं जाती. हमारे देश में लैंटना, पार्थेनियम वीड, ये बाहर के देशों से आगे हैं. दे आर एलियन स्पीशीज. कीस्टोन स्पीशीज वो होती हैं जो पूरे इकोलॉजी में स्टेबिलिटी बनाए हुए हैं. Select the wrong statement. It's very easy. W.M. Stanley showed that viruses can be crystallized. Yes. Contagium vivum fluid. मतलब वायरस का फ्लूइड अगर किसी को दोगे उसको इन्फेक्शन हो जाएगी, वो कंटेजियस है. It can cause infection. This statement was caused by Bejernik. Correct. Mosaic tobacco mosaic disease, AIDS are caused by viruses. Correct. Viroids were discovered by a scientist called T.O. Diner. They were not discovered by Jovansky. So this is a wrong statement. Axile placentation. Right, margin बना के. It's present in lemon. Right, multilocular ovi कर दीजिए, central axis पे बना दीजिए, axile placentation हो जाएगी. It's found in lemons. A childless couple can be assisted to have a child through a technique called gamete intrafallopian transfer. I mean, gametes can be added in the fallopian tube. Cool. It's called the gamete intrafallopian transfer. Cool. Destruction of the anterior horn cells. Anterior horn cells जो होते हैं, जिनको हम ventral horn cells of the spinal cord कहते हैं, ये motor neurons हैं. They help you to type, they help you to play piano, they help you to play violin. They're motor cells. So voluntary motor impulses will be hampered. The motor impulses will be hampered. Biological nitrogen fixation जब मुझे करना है तो मुझे nitrogenase enzyme चाहिए होती है.
इसको एनारोबिक कंडीशंस चाहिए। अगर ऑक्सीजन आ गया, ये एंजाइम आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये एंजाइम आपकी खराब हो जाएगी, ये काम नहीं करेगी। इट कैन हैव ऑक्सीजन पॉइजनिंग। सो आप बना दोगे एक मटेरियल को लेग हीमोग्लोबिन, जो एक पिंक कलर का मटेरियल होगा, एंड लेग हीमोग्लोबिन जो पिंक कलर का मटेरियल है, इट इज अ ऑक्सीजन स्कैवेंजर। दिखा है कहीं ऑक्सीजन स्कैवेंजर? यस। So it's going to eat away all the nitrogen. It's going to eat away all the oxygen and therefore protect the enzyme nitrogenase. And association of individuals of different species. एक species के होंगे तो population, single species. तो ये नहीं है, right? Living in the same habitat and having functional interaction. They are interacting with each other. Obviously, there will be biotic community. Correct? Ecosystem is the living and the non-living. यहाँ तो सिर्फ individuals की बात की है. Correct? Yes, ecological niche is their interaction with their habitat. पल्मोनरी डिजीज जिसमें एल्व्यूलाई डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हमने परसों की क्लास में किया है, एल्व्यूलाई की इलास्टिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है, इज कॉल्ड एज एम्फाइसीमा। इसको हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज भी कह सकते हैं, राइट? कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोका निमोनिया, right? Caused by Haemophilus influenza pneumonia, which is a viral disease. Asthma is an allergic disease when the pleural membranes rub onto each other. दोनों membranes एक दूसरे पे rub कर रही है, pleurisy, right? अब giant chromosomes होते हैं, ये बहुत देखो कितना घिचपिच है, कितना giant, पर ये open होके ring बना ली, again घिचपिच घिचपिच, पर ये open होके ring बना ली. So these rings जहां ये open हुआ है, they are Balbiani rings. अब यहाँ open हुआ है, can I make a protein or something? Tell me. Can I make something जहां ये open हुआ है? Will I be able to make something? So Balbiani rings are the large chromosome puffs or polyethylene chromosomes. These are sites of RNA and protein synthesis. जहां ये open, this is the part where it is open, and because it is open, I am able to make proteins. That's called as Balbiani rings. Cool. चलिए मैच करिए. Granothylocoids, they are membranous sacs in the stroma. Infoldings of the mitochondria are cristae. Cisternae, they are disc-shaped parts of the Golgi apparatus. Chromatin are condensed structures of the DNA. Thylakoids are flat membranous sacs in the stroma. Thylakoids, cristae, infoldings of the mitochondria of the inner mitochondrial membrane. Cisternae, disc-shaped parts in the Golgi apparatus, and condensed structure is called the chromatin. सेलुलर ऑर्गेनेल्स जिनके पास मेम्ब्रेन्स हैं. अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ही बार फ्लिप क्वेश्चन दोबारा आ गया. राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं है, इनको पैलिडे पार्टिकल्स कहते हैं, बहुत डेंस है, आरएनए से बने, प्रोटीन से बने. राइबोसोम नो, राइबोसोम नो, राइबोसोम नो. सो आंसर विल बी लाइसोसोम, गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया. अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं और 100% श्योर है, यू कैन सॉल्व दिस सुपर कूल क्वेश्चन. Auxins are growth factors. Indole acetic acid, indole butyric acid, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, naphthalene acetic acid. हमने ये सारा पिछली क्लास में किया है, right? So auxins are always made by the growing tip of the plant. Correct? जो टिप होती है वो क्या बनाती है? auxins. तो auxins जो टिप से बनते हैं वो हम Avena sativa, right? Avena sativa is oat. The tip is called coleoptile. ये बनाती है, ये एक्सपेरिमेंट वेंट ने किया था, FW वेंट का ये एक्सपेरिमेंट था. Cool. Which of the following layers in the antral follicle, ग्राफियन फॉलिकल की कौन सी लेयर इज एसेलुलर? सेल नहीं है. थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना सेल्स का बना है. स्ट्रोमा में तो वैसे ही सेल्स नहीं है, सेलुलर नॉन सेलुलर से लिक्विड पार्ट, कोई फर्क नहीं. ग्रैन्युलोसा सेल्स, कोरोना रेडिएटा, क्यूमुलस उफोरस आर ऑल सेल्स. Only thing which is not cell is cool. Zona pellucida. Satellite DNA is telomere. Satellite DNA is non-coding part. वो पार्ट ऑफ द डीएनए जो नॉन कोडिंग पार्ट है. करेक्ट? वो पार्ट ऑफ द डीएनए जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो किसी चीज के लिए कोड नहीं कर रहा है, is your satellite DNA. ये देखो, अगर वो कोड नहीं कर रहा है, my satellite DNA and your satellite DNA has to be very different, so it shows polymorphism. DNA fingerprinting में हम VNTR लेते हैं, variable number tandem repeat. That also is a satellite DNA. So they show polymorphism, because of which it is very different from the individual to individual. But parents mate, families mate can still be little similar. So satellite DNA is a repetitive DNA, is a non-coding part of the DNA. They show polymorphism difference amongst individuals, but in a family they can still be similar. सेल वॉल किसमें एब्सेंट होगी? परसों की क्लास में हमने किया है,
Pleuropneumonia-like organism. It's the smallest organism. It can cause infections. It is cell wall deficient. इसके पास cell wall नहीं होती है. एग्जाम में सी वी कम टू 40 minutes एंड क्वेश्चन नंबर 81 पे है. अगर एग्जाम में आपने ऐसा कर लिया, ऑसम हो जाएगा, लाइक ऑसम. एग्जाम में अगर आपने ऐसा कर लिया. एंजियोस्पर्म्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस मदर सेल्स में होता है. दोनों ही मेल और फीमेल गैमेट मदर सेल्स में बनते हैं. तो मदर सेल्स स्पोरोजेनेसिस करने के लिए क्या करती हैं? मियोसिस. व्हाट डू दे डू? मियोसिस. Roots play significant role in water absorption in insignificant. See, peas, wheat and sunflower, they will be in the soil and they will absorb. Pistia is aquatic plants, it's free floating. Itna water absorption ki zarurat nahi hai. So the answer will be Pistia. Which of the following are most suitable indicators? हमने अब भी किया, sulfur dioxide, air pollution, acid rain. Lichens will die. So जहां पर भी air pollution बढ़ रहा है, you will never see lichens there. Grafted kidney may be rejected in a patient due to cell-mediated immune response, which is because of T cells. Graft versus host reaction is because of cell-mediated immunity, because of T cells. Body having meshwork of cells, internal cavities lined with blood filtering flagellated cells. Right? Food fill. ये देखिए लगा हुआ है. Coanocytes हमें पता है, कॉलर सेल्स. राइट. वाटर आएगा, यहां फिल्टर लगा है, मेशवर्क, ऊपर जाता है फिल्टर हो जाएगा. इट्स पोरिफेरा. यस, इज दैट क्लियर? मेशवर्क ऑफ सेल्स, कोआनोसाइट्स. करेक्ट. चलिए क्वेश्चन नंबर 86. उल्टी गिनती शुरू होगी. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन एपीवैल्व, हाइपोवैल्व, मेड अप ऑफ सिलिका इम्प्रेग्नेटेड. कल भी किया है ये. Yes, they are chrysophytes. Correct. They have overlapping cell wall like a soapbox. Any doubts? Anything that you have not been able to understand? Question number 87. Choose the wrong statement. Morels and truffles are poisonous. Wrong. They are edible. Neurospora crassa is a wonder of biochemical genetics. We've used it so many times. Yeast is unicellular fermentation, Saccharomyces. Penicillium multicellular, Penicillium notatum, antibiotics. Morels and truffles are edible. They are not poisonous. They belong to Ascomycetes. In human females, meiosis 2 is not completed. देखिए ह्यूमन फीमेल में सेकेंडरी oocyte आ गया आपका. ये आपका सेकेंडरी oocyte है. सेकेंडरी oocyte के पास सेंट्रियोल ही नहीं है. जब तक सेंट्रियोल ही नहीं होगा तब तक डेवलपमेंट होगा ही नहीं, डिवीजन होगा. सो दिस विल बी द मेल गैमेट. दिस विल गिव एन प्लस सेंट्रियोल. तो जब एन प्लस सेंट्रियोल आएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इट इज ओनली देन दैट इट विल स्टार्ट टू डिवाइड. लास्ट से एक क्वेश्चन पहले, यूट्रोफिकेशन में there is increased biological oxygen demand. We put undigested waste material in the sewage because हम undigested waste, कल परसों जो हमने किया था उसमें पेट्रोलियम आंसर था, because वो डाइजेस्ट नहीं हो सकता. वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं. So eutrophication में we put undigested waste material जो पानी में जाके डाइजेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कंजम्पशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से the organisms of the lake can die. लास्ट क्वेश्चन. सुकस इंटेरिकस में कौन सी एंजाइम नहीं होती? सुकस इंटेरिकस इज इंटेस्टाइनल जूस. करेक्ट. इसमें माल्टेज होती है, लाइपेज होती है, न्यूक्लियोसाइडेज होती है. राइट. न्यूक्लियस इज आवर एंजाइम्स ऑफ द पैंक्रियास. So my dear children, in record 44 minutes, we've been able to do 90 odd questions. If you are able to repeat this in the examination, I think it's going to be brilliant. If you can really repeat this in the examination and अगले 45 minutes 50 minutes में अगर आप केमिस्ट्री कर लो तो फिजिक्स के लिए आपके पास कितना टाइम बचेगा, और जब आप आराम से फिजिक्स करोगे आप फिजिक्स निकाल लोगे. माय डियर चिल्ड्रन, मे गॉड ब्लेस यू. माय बेस्ट विशेस विद ईच वन ऑफ यू. टीम वेदांतु स्टैंडिंग बिहाइंड यू लाइक अ रॉक. Don't worry, we will never leave you. आपकी सीट आएगी, we will rejoice, we will celebrate. आपकी सीट नहीं आएगी, we are going to make sure that आप अगले साल सीट लाओ. We are going to be there with you. Yes. So with that, my dear children, we come to the end of another phenomenal session. I would really like to thank you for taking time out and for listening to this session. And I hope ये paper solve करके आपको लग रहा हो that you can do very well. Yes. So with that, I, Dr. Vani, on behalf of Vedantu, end this session. I'll see you really soon in the next session. Till then, take care, my dear children. Bye.